Hello students, good morning. So today is actually Teachers Day, it's ours day, right? Not only ours, हमारे भी टीचर्स हैं. मेरे टीचर्स के लिए, मेरे गुरुजी के लिए लाइफ में टीचर्स सिर्फ एकेडमिक वे में नहीं होते हैं. डेली लाइफ में बहुत सारे इंसान आके हमें बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं. तो उन सब गुरुजी के लिए, उन सब टीचर्स के लिए अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. इवन हम लोग कभी कभी आप स्टूडेंट से भी कुछ सीख सकते हैं. अगर आपने जिनके थ्रू मैंने कुछ सीखा है वो मेरे लिए गुरुजी हैं, राइट? सो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल ऑफ अस एंड टू ऑल ऑफ आवर टीचर्स, द टीचिंग फ्रैटर्निटी. चलो शुरू करते हैं टीचर्स डे में नया वीडियो, नया क्लास. सो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों का क्लास वर्क था. होप यू गाइस सॉल्व योर क्वेश्चंस. या अगर कुछ डिफिकल्टी आया हुआ है राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 देन एक्सरसाइज 2.1 यू कैन आस्क मी पर्सनली. ओके, सो आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. चलो, find the value of the following. Find the value of the following. And the first question, question number 11 is tan inverse 1, tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half. So हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है. तीनों प्रिंसिपल वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो ये क्वेश्चन का वैल्यू मिलेगा हमें. ऑलराइट, सो दिस इज tan inverse. It is already 1 there, positive 1. So I can write a tan here. 1 को replace कर रहा हूँ. tan 45. tan 45 is a 1. This is cos inverse minus x. So you can write here pi minus cos inverse x. Okay. Plus this is sin inverse minus x. That is minus sin inverse x. जैसे मैंने फॉर्मूला में दिया हुआ है. Okay. Since अगर डाउट हो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. Okay, तो cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. Sin inverse minus x is minus sin inverse x. Now you can cancel this one and this one. So what left here is pi by 4. This is pi. This is minus cos inverse. For that half, I can write that cos pi by 3. Okay, cos 60 so half of that. Minus this is sin inverse. There. For that half, I can write that sin pi by 6, 30 degree. Cancel the things here. Okay. So what left here is pi by 4 plus pi minus pi by 3 minus pi by 6. Take the LCM. 4, 3, 6, the LCM will be 12. It's 3 pi plus 12 pi minus 4 pi minus 2 pi. So 3 plus 12 is 15 minus 6 is 9 pi by 12. अभी कंफ्यूज मत होना. पहले वाले में तो बिलोंग्स टू प्रेस्क्राइब्ड रेंज बता रहा था. इसमें इसका रेंज अलग है, इसका रेंज अलग है, इसका रेंज अलग है. इसलिए मल्टीपल फंक्शंस को इस तरीके से देता है तो फिर से यहाँ पर रेंज दिखाने की जरूरत नहीं है. ये कंपोजिट हो गई. अलग अलग से सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के ऐड कर रहे हैं. सो नो नीड टू मेंशन द रेंज हियर बिकॉज़ सबका रेंज अलग अलग है. ऑलराइट, फाइन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग. स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, now
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू है। देखो लास्ट ईयर से 2020 से सीबीएसई में भी एमसीक्यूज आते हैं 10 क्वेश्चंस। ओके, तो अभी ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये एमसीक्यू है, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12, if sin inverse x is equals to y, if sin inverse x is equals to y, then option A is what is the option A? 0 is less than equals to y is less than or equals to pi. Option B is minus pi by 2 is less than or equals to y is less than or equals to pi by 2. Next is C, 0 is less than y is less than pi. And the final one is minus, this is D, minus pi by 2 is less than y is less than pi by 2. So the question is, if sin inverse x is equal to y, then which of the following is correct? There are 4 options and one out of the 4 options will be correct. We need to find out which one is correct here. Okay, so let's start. इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। Sin inverse x belongs to रेंज। मैंने बताया था ना, रेंज, सब रेंज का खेल है। आपको रेंज प्रॉपर्ली आनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शंस। इज दैट क्लियर? सो रेंज पे फोकस करो। सो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। दिस इज द रेंज। ओके, इट मीन्स minus pi by 2 is less than or equals to sin inverse x is less than or equals to pi by 2। ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट आने से लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट आने से लेस देन जहां पे स्क्वायर आएगा उसमें लेस देन इक्वल टू लगेगा, जहां पे स्मॉल आएगा वहां पे क्या लगेगा? ओनली लेस देन। वो इंटरवल्स मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास 11 में। कहां पे? क्लास 11 में। फिर से ध्यान से सुनो, स्क्वायर ब्रैकेट आया, these are the square brackets, so for this square bracket I am putting a less than or equals to, for that square bracket also I am putting less than or equals to. Then check it here, minus pi by 2 is less than or equals to sin inverse x. What is sin inverse x? Sin inverse x is y. What is sin inverse x? Sin inverse x is y. So this minus pi by 2 is less than or equals to, instead of this sin inverse x I am going to put there y is less than or equals to pi by 2. So this is the answer, and it is right there in option number B. कहाँ पे? ऑप्शन नंबर B is the correct answer. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर B। चलो स्क्रीनशॉट लो और ये चीज ध्यान से सुनो, स्क्वायर ब्रैकेट होने से लेस देन और इक्वल्स टू, स्मॉल ब्रैकेट होने से ओनली लेस देन। डन? स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Okay, question number 14 is, this is our question number 14. Tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2 का वैल्यू, ऑप्शन ए इज pi, option B is minus pi by 3,
option C is pi by 3. Yeah, and our option D is, what is the option D? Option D is 2 pi by 3. 2 pi by 3. Okay. What is the option A? Pi. What is the option B? Minus pi by 3. What is the option C? Pi by 3. And what is the option D? It's 2 pi by 3. Alright. So चलो शुरू करते हैं. Solution. This is tan inverse root 3 minus, that is sec inverse minus 2. So tan inverse, this is already positive. So the tan there, tan कितना होने से root 3 होता है? 60 degree, pi by 3 minus sec inverse minus x is pi minus sec inverse x. What is x here? 2. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. sec inverse minus x is pi minus sec inverse x. All right. Then cancel the things. This is pi by 3 minus, what is that? Pi minus and minus plus, we have a sec inverse there. For that too, I will put a sec here. Sec 60 degree makes it what? Sec 60 degree makes it 2. Alright. Now you cancel these things. So what left here? Pi by 3 minus pi plus pi by 3. Sum up करोगे तो ये क्या आएगा? Minus pi by 3. And that's your answer. And the answer is option number B. इसको सम अप करो, माइनस पाई बाई 3 मिल रहा है और माइनस पाई बाई 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में. दैट्स योर आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1. होप you guys solve right from 1 to 10. If you have some difficulties there in question number 1 to 10, you can again personally contact me through WhatsApp, or also you can go to Telegram. I'll just send you the link of my Telegram channel. All right. Then let us move to the next topic. ये हो गया first exercise. Now the second exercise 2.2. 2.2 में जाने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला बनाना है. क्या बनाना है? कुछ फॉर्मूलाज बनाने हैं. तो चलो शुरू करते हैं. The first formula is, wait. यहाँ देखो, some formulas of x and y. Some formulas of what? X and y. The first one is sine inverse x plus sine inverse y. Sine inverse x plus sine inverse y is equals to sine inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. What I say? Sine inverse x plus sine inverse y is equals to sine inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. This is a formula. By chance exam में prove that sine inverse x plus sine inverse y equal to this much बोलेगा और आप लोग इसको सिर्फ याद करके जाओगे, then आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, डिराइव नहीं कर सकते हो. तो चलो कैसे ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ है, वो सीखते हैं. यहाँ पे चलो, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, नाउ हाउ कम, कैसे आया? We know that, what we know? We know that sine A plus B, what I say? Sine A plus B is equals to
sin A cos B plus cos A sin B. What I say? Sin A plus B. This is the in class level, okay? Sin A plus B is equals to sin A cos B plus cos A sin B. We took a formula from class level. By using that formula, we're gonna establish this formula. Okay? Fine. Let sin A is equals to x and sin B is equals to y. Sin A is equal to x, sin B is equal to y. Then A is equal to how much? A is equals to, this sign goes that side, it will become sin inverse, और यहाँ पे 1 था, ट्रांसफर होकर उधर गया, power minus 1 sin inverse x, and this is B is equal to sin goes that side, it will become sin inverse y. Alright, so by assuming sin A equal to x and sin B equal to y, we got the values of A and B. Now, therefore, इसको लिखो sin, what is this? A. This is A, right? So for A, I am going to put there what? Sin inverse x plus, for that B, I am going to put there what? Sin inverse y is equals to, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? Fine, is equals to, what is this? This is sin A. This is sin A, and for that sin A, I am going to put what? X. ये sin A के बदले मैंने x लिखा. Fine. What is this? Cos B. I don't have the value for cos B here. I have the value for sin A and I have the value for sin B, but I don't have the value for cos B. So, as you all know, cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. ये आप लोगों को पता है. This is there in class 10. Cos theta equal to under root 1 minus sin square theta. For this cos B, I am going to write there under root 1 minus sin square B as per this formula. Okay. Plus, again I don't have the value for cos A here. Sin A or sin A का value है, cos A का value नहीं है. For that cos A, I am going to put there under root 1 minus sin square A. What is sin B? What is sin B? Sin B is y. So sin B के बदले यहाँ पे क्या लिखा? Y. Hope you understood. Now इसको हम लोग शिफ्ट करके उधर ले जाएंगे. Then what is this? Sin inverse x plus sin inverse y is equal to, if you just transfer this sign to that side, it will become sin inverse. यहाँ पे sin था, उधर गया तो sin inverse. What is this? X under root 1 minus, this is sin B square. What is sin B? Sin B is y. So for the sin B, I have put there y and that is square, so it will be square. You first write this y, ये y को पहले लिखो under root 1 minus sin A square. What is sin A? Sin A is x. So it will be x square, and that is how we got that formula. So we established the formula here. Okay. Check it here. Sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. Done? Fine. Screenshot ले लो एक इसका. Okay. The next is यहाँ देखो, ये sin inverse x plus sin inverse y था, मैंने इसको माइनस कर दिया, इधर ये माइनस, then this will become minus. Okay, अभी ये कैसे बना?
आप लोग खुद डिराइव कर लो। अभी जैसे मैंने किया था वैसे ही करना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है? साइन ए माइनस बी। ऑलराइट, तो ये साइन इनवर्स एक्स, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको आप लोग डिराइव करना है। ओके, नेक्स्ट इज रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3, cos inverse x plus cos inverse y is equals to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square। इसमें भी कुछ कंडीशंस आएंगे जो फिलहाल आप लोग का एनसीईआरटी में नहीं है, बट एडवांस लेवल में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो कि फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है। बाद में हम लोग डिटेल में जाएंगे। फिलहाल यहाँ देखो, cos inverse x plus cos inverse y, this is the best formula। cos inverse x plus cos inverse y equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square। all right, now how come आया कैसे? ये तो हो गया फॉर्मूला। चलो प्रूव दैट बोल के अगर इसी को पूछ लिया एग्जाम में तो याद करके फायदा नहीं होगा। मगिंग अप इज नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। ओके, सो आपको सीखना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें प्लस है ना बीच में। वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज हाउ इट कम्स। ओके, वी नो दैट cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b। It is again there in class 11। तो देखो 11 का ट्रिगोनोमेट्री, इवन 10 का ट्रिगोनोमेट्री एंड 11 का ट्रिगोनोमेट्री परफेक्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट। अब चलो, लेट cos A is equal to x and cos B is equals to y। cos A is equal to x and cos B is equals to y। Then what will be A? A is equal to cos goes that side, it becomes cos inverse x, and B cos goes that side, it becomes cos inverse y। A is cos inverse x, B is cos inverse y। all right, fine। Therefore this is cos, for this a I can put cos inverse x, and plus for this b I can put the what? Cos inverse y। okay, is equal to, what is this? This is cos a, and what is cos a? Cos a is x, so for this cos a I can put a x there, for this cos b I will put the what? Y, minus this is sin a। now we don't have the value of sin a and sin b here, then what we need to do? Sin theta is equals to under root 1 minus cos square theta। this concept it's there in class 10। तो देखो ये साइन ए और ये साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड फॉर दैट साइन ए आई कैन पुट देयर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड फॉर दैट साइन बी आई कैन पुट देयर व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, नाउ you just transfer this cos to that side, then it will become cos inverse x plus cos inverse y is equals to, you transfer this cos to that side, it become cos inverse, what is this? X, what is this? Y minus under root 1 minus, this is cos a, and what is cos a? Cos a is x, so for this cos a I can write that x, it's square here, again under root 1 minus cos b is y, so put y there, so this is the formula, how it comes। ये कैसे आया? ऐसे आया।
cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square. This is the formula. Then screenshot level. Okay. Then next is Roman number 4. Roman number 4 में cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy plus reverse. रोमन नंबर 4 का फॉर्मूला, इसको आप लोग को डिराइव करना है। अभी जैसे मैंने किया था, देयर आई यूज व्हाट, cos a plus b, here you gonna use cos a minus b, cos a minus b लगा के इसको डिराइव कर लेना। ऑल राइट, next is Roman number 5, tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y by 1 minus xy. This is the formula. Fifth one. How? कैसे आया? Let we know that tan a plus b is equals to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. What I say? Tan a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a and tan b. Let tan a is equal to x and tan b is equal to y. Then a is equal to tan goes that side, become tan inverse x and b is tan inverse y. Therefore, this is tan. For this a I have put there tan inverse x, yeah, plus for this b I have put there what, tan inverse y is equals to, what is tan a? What is tan a? It's x. What is tan b? It's y. Yeah, by 1 minus, this is tan a x and that is tan b y. Now this is tan inverse x plus tan inverse y is equals to, if you transfer this tan to that side, it will become tan inverse x plus y by 1 minus xy. वही फॉर्मूला देखो, वही आया ना। तो tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus tan inverse y by tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. देखो ये मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला आया कैसे उसे मैं समझा रहा हूँ। दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला एंड हाउ कम दैट फॉर्मूला, देयर इज अ लिंक बिटवीन क्लास 11 कंसेप्ट एंड दिस क्लास 12 कंसेप्ट। तो लिंक को प्रेस कर रहा हूँ, तो आपका अगर 11 का कंसेप्ट भूल गए हो, रिवाइज करो। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज tan inverse x plus tan inverse y. अब ये tan inverse x minus tan inverse y, then this will become minus and this will become plus. ओके, ये आप लोग खुद डिराइव कर लेना। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल और फॉर्मूला, नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूला डिराइव करना है। पहले सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे और उनका 11 के साथ लिंक को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे 11 के साथ उनका लिंक समझ में आएगा, देन
it will be bit easy for us to solve all the questions, because आपको डेप्थ में समझ में आएगा how they are linked. Okay, till then enjoy your day. I also gonna enjoy my day today. It's Teachers Day, right? I'm gonna celebrate. All right, bye bye.